Hello guys, welcome to another fresh episode of your favorite show about all the gadgets and all the gizmos, which is Gadget 360 with Technical Guruji. And as with every week, इस हफ्ते भी मेरे पास में काफी कुछ exciting चीजें हैं आपके लिए. Interesting gadgets, some cool tips, and of course answering all your questions in my favorite segment, Ask TG. So everything coming together. जल्दी से आगे बढ़ते हैं. My name is Gaurav, aka Technical Guruji. चलिए शुरू करते हैं. So now starting with the standard ritual, सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या हुआ, क्या नए अपडेट्स in the field of gadgets with our news of the week. In their S1 series of scooters, Ola ने लॉन्च कर दिया है अपना cheapest variant yet. इसके इंट्रोडक्टरी प्राइसेस स्टार्ट करते हैं 79,999 X showroom of course. The S1X will be available in 3 variants. S1X जो आता है 2 kWh बैटरी के साथ, then एक वेरिएंट 3 kWh बैटरी के साथ, and then there's the S1X Plus. उसमें भी 3 kWh की बैटरी पैक होगी but with a variety of additional features. डिलीवरीज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स. Genshin इम्पैक्ट के enthusiast gamers are in for a treat क्योंकि इसमें ऐड कर दिया गया है the Fontaine region जो इंस्पायर्ड है 1910s के फ्रांस से, along with a set of new characters as well. गेम प्ले अब फीचर करता है एक्सप्लोरेशन अक्रॉस लैंड एज वेल एज अंडर वाटर रीजन्स. एक्टिविजन इज कमिंग अप विद मॉडर्न वॉरफेयर 3 जिसका रिवील इवेंट था 17th of August को ऑन मॉडर्न वॉरफेयर वॉरजोन. गोइंग बाय द स्निपेट्स एंड क्लिप्स जो शेयर करे थे गेम मेकर ने ही, वी आर सर्टेन दैट दिस विल टाई अप विद द मॉडर्न वॉरफेयर 3's गेम प्ले जो 10th of November 2023 को रिलीज होने वाला है. If you're somebody who loves off-roading and आप एक EV भी चलाना चाहते हैं, Mahindra has unveiled the concept Mahindra Thar E electric SUV. इसको अगर XUV 400 से कंपेयर किया जाए, जो उनकी existing E SUV है, the Mahindra Thar E will sport a bigger battery pack and of course the Thar lineage. This EV is expected to launch towards the end of 2024 या फिर early 2025. So guys, for the top story of the week, what we have with us is Sony's all-new party speaker, Sony SRS-XV800. Now, Sony को साउंड के बारे में देखो सब कुछ पता है, but I think प्रोडक्ट नाम जो है वो थोड़ा सा easy हो सकता है because at times it gets very difficult. मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया है. The all-new Sony SRS-XV800. Yes, exactly. That's the name. It's the all-new party speaker from Sony. काफी बड़ा सा है, 18.5 किलो का उसका वजन है. I mean, मैं उसको स्टूडियो में से लेके नहीं आया because it won't fit in here because you know it's all about party, it's all about entertainment. आप पूल साइड पार्टी कर सकते हैं, आप उसको अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं. I mean, the best part is this is a portable speaker. You know, it has a battery backup of around 25 hours. काफी बड़ा होने के बावजूद you can just carry it around. It has a nice RGB lighting setup. You can connect your microphones or your guitars. So आप karaoke sessions वगैरह को अच्छे से enjoy कर सकते हैं. I mean, you know, with multiple apps coming in from Sony, it gives you that entire customization around the lighting or different, you know, cool sound effects. Let's see up close how exactly is this Sony's all-new SRS-XV800 party speaker. If you are somebody जो बिलीव करता है कि life should be lived loud and at full volume, Sony आपके लिए लेके आया है उनका लेटेस्ट वायरलेस पार्टी स्पीकर the XV800. अब चाहे आपको पार्टी करनी हो जहां पे आपको रॉक आउट करना हो या आपको एक इमर्सिव सराउंड साउंड एक्सपीरियंस चाहिए while watching shows or your favorite movies, the Sony XV800 is power packed with an incredible sound system to take care of all your needs. Priced at ₹64,990, XV800 अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अलग है as it comes with a power backup that can last you up to a whopping 25 hours. What's even better, इसमें क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी है जो स्पीकर को बैटरी बैकअप देता है of up to 3 hours, that too in just 10 minutes. What makes the XV800 stand out? इसमें X balance speaker unit है जो हेल्प करता है डीपर एंड क्लियरर बेस को आपको देने के लिए so that your party has a thumping vibe. Adding to that, the XV800 boasts of omnidirectional sound, which is made possible with the multiple tweeters जो deliver करते हैं clear sound from the front as well as speaker के पीछे की साइड से भी. Thanks to the handle and the wheels, XV800 ये जो beast of a speaker है, it is very portable. You can take it to whichever party you want to participate in.
XV800 में एक टीवी साउंड बूस्टर फीचर भी आता है which lets you enjoy enhanced sound of audiovisual content such as live performance videos and movies. And for the karaoke lovers, आपको सिर्फ एक mic plug in करना है and you're good to go. Okay, so coming at a price of approximately 65,000 rupees, speaker बहुत बड़ा है, the sound quality is fantastic, but you would want to invest this amount if you are sure कि आप इस speaker से अच्छे से party करने वाले हैं, because otherwise maybe a standard pair of earphones would fit your needs. So guys, did you know the most common password of all times is, yes, you guessed it, 1 2 3 4 5 6. ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि टुडे ऑल द हैकर्स दे आर डेफिनेटली यूजिंग दिस सिंपल सॉफ्टवेयर्स जहां पे सच काइंड ऑफ कॉमन पासवर्ड्स एज 1 2 3 4 5 6 और 11111 और QWERTY और लाइक पासवर्ड बीइंग पासवर्ड, इसको इजीली गेस कर पाते हैं. एंड एट टाइम्स multiple products and services won't let you set 1 2 3 4 5 6 as a password because they can easily detect कि it's quite easy to guess और इसीलिए वो आपको ये पासवर्ड लगाने नहीं देंगे. तो अगर आपका करंट पासवर्ड अभी चल रहा है 1 2 3 4 5 6, so it's better to change that password to something complex. Now guys, the next gadget that I have, ये एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, but sometimes जैसे हमने बचपन से सुना है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, sometimes these tiny gadgets, they are very impactful, they are super useful, especially in the field of Apple. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? Because what I have is this. It is on the back of my iPhone. It snaps like magnetically because यहाँ पे MagSafe है, तो like this, and it helps you record all your calls. See, call recording in Android is like a piece of cake. I think सभी लोग use करते हैं for various reasons. Of course, you would need to follow the local laws before recording any call because you would not want to get into any legal trouble. लेकिन at times you would want to record calls for your own personal record या फिर अगर आप कोई एक important deal के बारे में बात कर रहे हैं तो you would want to have that recording just as a backup या sometimes on an important call and you would want to play that call again just to make sure that what all the conversation was. iPhones में अभी तक वैसा कोई ऑप्शन नहीं था to record calls and especially when you talk about a FaceTime call or a WhatsApp call. But यहाँ पे this is Magmo call recorder. This gadget comes all the way from South Korea जहाँ पे ये बनाया गया है. And the thing is कि ये जब आप फोन के पीछे लगा देते हो, it needs no application, no kind of software to be installed, no notification, nothing. It is a complete covert product for call recording. यहाँ पे the battery life is for 6 hours. It can store call recordings for up to 500 hours. And यहाँ पे the thing is कि जैसे आप इसको चिपका देते हैं, if you want to record any call, whenever, you just need to flip the switch and it instantly starts recording. The moment you want to stop the recording, just flip the switch one more time. And यहाँ पे ये काम में लेता है the vibrations coming in कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, now your audio is straightforward, वो सीधा ये अपने माइक पे पिक कर लेगा. But to record the audio that's coming from the other side, जो आपके ईयरपीस में आवाज आ रही है, वहाँ पे जो minor vibrations हो रहे हैं as the sound waves are coming in, ये उनको detect करता है because there's a piezoelectric sensor inside और उससे वो सारे vibrations को record करने के बाद में it stores in form of an audio file. The moment you plug this device to your computer, you can have a list of all the recordings that you have done in the past and ये WhatsApp calls, FaceTime calls या normal calls या anything, if any sound is coming in from your iPhone, this will record everything completely silently without letting anyone know the call is being recorded. So this is Magmo call recorder. थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो एंड मैं आपसे उसके बाद बात करूँगा. iPhone यूजर्स अब फाइनली अपनी FaceTime एंड WhatsApp कॉल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं थैंक्स टू द ऑल न्यू Magmo कॉल रिकॉर्डर. देयर आर एब्सोल्युटली नो हैसल्स एंड पेयरिंग ट्रबल्स. आपको सिर्फ इसको अपने डिवाइस के पीछे स्नैप करना है
जैसे कि आप एक वायरलेस पावर बैंक को करते। सिंपली स्लाइड द बटन अप व्हेन यू नीड टू रिकॉर्ड अ कॉल, दैट इज इट। Magmo immediately starts recording without any hassles. And when you're finished, slide the button down and the recording stops. Magmo Call Recorder एक 32 GB inbuilt memory के साथ आता है जो आपको रिकॉर्ड करने देती है up to 500 hours and 6 hours on one full charge. You can buy the Magmo Call Recorder for just $8,999 from Amazon. Guys, I'm sure आप सभी Android users जो है वो सोच रहे होंगे what's the need of this kind of a device to be attached to your phone for basic call recording, because ये काम तो आप सब एक क्लिक में कर लेते हैं. But the advantage of this product is कि ये normal calls के अलावा WhatsApp and FaceTime या किसी भी कॉल को, फिर चाहे वो Zoom कॉल हो या Skype पे हो, रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. वैसे मैं भी आपकी हेल्प करने वाला हूँ. I'll tell you a nice tech tip and also answer your questions जो आपने पूछे थे सेगमेंट आस्क टीजी. एवरीथिंग कमिंग योर वे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Hello everyone, welcome back after the break to Gadgets 360 with Technical Guruji. I mean, ये show, I'm sure it's your favorite. It's keeping all your batteries charged because I'm talking about gadgets. But speaking of batteries, let me give you this nice tech tip. Okay, so the tip is नॉर्मली इट वोंट मैटर कि आप अपने फोन की बैटरी को कैसे कब कितना चार्ज कर रहे हो, बिकॉज द बैटरीज आर स्मार्ट, द चार्जर्स आर स्मार्ट, द डिवाइसेस आर स्मार्ट, एंड ओवरऑल अगर आपको एक ठीक ठाक बैटरी को यूज करना है, लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 2-3 years, इट्स ऑल फाइन नो मैटर हाउ यू चार्ज इट. बट अगर आपको आपकी बैटरी को एकदम प्रिस्टीन हेल्थ में रखना है, अगर आपको चाहिए कि वो बैटरी बहुत लंबे समय तक चले, तो जस्ट फॉलो दिस टिप. Always try keep your battery level between 20 and 80%. 80% के बियॉन्ड बैटरी को चार्ज मत करो एंड 20% के नीचे उस बैटरी को मत जाने दो. इफ यू ट्राई कीपिंग योर बैटरी इन बिटवीन दिस 20 and 80%, you would get the best battery health and I'm sure कि आपकी बैटरी काफी लंबी चलेगी. हो सकता है आपका गैजेट खराब हो जाए बट बैटरी खराब नहीं होगी. Okay, so guys, time now for me to answer your questions जो आपने पूछे थे, in our segment Ask TG, and this is one of my personal favorites जहाँ पे I talk to you directly and try answering your queries, and इस week भी we have some amazing questions. Let's see क्या है वो questions. Hi Technical Guruji, my question for you is, which is the most safest social media platform according to you? Okay, I'll answer this short and crisp. Platforms तो बहुत सारे हैं. The level of security at times kind of varies, but it's in your benefit कि जो आपके actions हैं, the way you use या the way you trust these platforms, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो. एंड यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, कीपिंग योर पासवर्ड सिक्योर, मेकिंग श्योर दैट आप जैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म को ऐप को यूज कर रहे हो, आप अपनी तरफ से kind of you putting in a full doubt that let's say this app or platform is not at all secure, तब आप उसको कैसे यूज करोगे. If you start using it that way, I think that would ensure that your data is protected because you need to act from your end to begin with. Hello Technical Guruji, Harshita Mishra this side. My question to you is, do modern appliances like TV and computer draw power even after turning them off? And do we need to unplug them after each use? Rarely, to be honest, because the power draw is minimal, like very, very, very minimal draw of power. You talk about modern TVs, modern speakers, the modern chargers that we have. अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, if you are not actively using these devices and they are just they're plugged in and that's it, the power draw is like negligible. तो आप बार बार अगर इस हैसल को झेल सकते हैं कि आप उनको बार बार प्लग अनप्लग करें, तो इट्स completely up to you. बट नॉर्मल केस में पावर ड्रॉ बहुत कम है, which is like almost as good as zero. What are the must-have gadgets for remote work or online learning?
Okay, so to begin with, you'd want to have a good laptop or a good tablet because आपको एक बड़ा screen चाहिए होगा to do some remote work and learning, let's say. At the same time, you'd want to have a nice setup for a video. Could be an included, webcam जो आपके laptop में है या फिर जो आपके laptop के अलावा tab में let's say आपका selfie camera है. But if you'd want to have a professional, video quality, तो आपके पास में एक dedicated camera भी होना चाहिए as a webcam. At the same time, you'd want to have a nice pair of headphones जहाँ पे आपको आवाज़ भी अच्छे से आ रही है and the mic is good enough ताकि आपकी आवाज़ भी सामने you are able to transmit nicely. At the same time, you'd want to have a clean environment जहाँ पे you're getting this space to do remote working or online learning, and the core of it, you'd want to have a stable internet connection. Hello Technical Guruji, my name is Divya. I wanted to ask that how does noise cancellation headphones work and which one according to you gives the best sound quality? See, the simple concept about noise cancellation. अब around you, let's say आपने एक headphone पहना है and उसमें you are playing your music, तो आप अपना गाना सुन रहे हैं. But if around you there's different disturbances कि अगर आप let's say एक flight में हैं तो वहाँ पे जो constant engine की आवाज़ है जो एक चलता है. So the thing is that there are microphones on the outside of these headphones या earphones जो कि kind of they pick up the outside noise and they process that noise in a way that it gets cancelled because they know the pattern, and inside the inner speakers they play a complete opposite of what's on the outside. So technically it gets cancelled and आपको जो अंदर आवाज़ मिलती है it's completely free of any noise. Now the way these headphones and earphones work, they are most suitable for a constant kind of low end frequency वाली noise को eliminate करने के लिए. At times they would not be able to filter out the noise of people talking या some random kid who's screaming. वो filter करना is very मुश्किल because the way kind of the sound waves are very dynamic in nature, it becomes difficult for these earphones to filter that out. Speaking of the best, you can have a look at let's say the Apple's AirPods. They are very good. Sony's the XM5s, they are very good. Bose is doing a good job. So I mean, different brands, different products, different price ranges. Depending on what exactly do you need, you can make your pick. So guys, that's all for this week's Gadgets 360 with Technical Guruji. And I mean, हर बार की तरह this week as well, I had so much for you. एक बड़े से party speaker के बारे में मैंने बात करी. At the same time, I had this tiny gadget for all the iPhone users जिनको call record करनी होती हैं. Next week as well, I have got complete planning done. मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक बहुत ही interesting, amazing episode. In the meantime, if you have any questions, any queries, कोई भी आपका feedback है, कोई भी आपका message है, drop in everything to my email. You know what it is. It's tg@ndtv.com. मैं आपसे मिलता हूँ सीधा next week एक नए exciting episode के साथ में. That's all for now. Have a good day.